Guys, this is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the transistor as a common emitter characteristic. So we know that the transistors also used in three ways, just like common emitter, common base, and common collector. So here we are we are going to get discuss about the common emitter characteristic curve of the NPN transistor. So let me discuss here. This is the CE explanation of transistor. So here this transistor used as a common emitter. Okay, so this is a transistor which used as a common, means जो common portion होता है वो अर्थ connected होगा like this, and this is the current flow. This is NPN transistor. This is base, and this is IB in microampere order, and here this is the collector region, and here this is milliampere order. This is IC current. Okay, and now here the voltage drop is VBE region का VBE होगा. Here also attach input resistance R1 with the extra biasing VBB. Okay, so this is the BE region, and here this voltage is V between C and E, VCE. Okay, like this. And also attach a load R2 with the output voltage VCC, like this. Okay, so this is the circuit diagram of the common emitter of transistor NPN. So here this NPN transistor used as the common emitter form. So its emitter is connected from the earth, okay, and base connected from the input voltage VBB and input resistance R1, whereas collector attached to the output or load resistance R2 or output source VCC. So here voltage drop between B and E is VBE, and here the voltage drop between C and E is VCE. So this BE region, first BE region in this curve is works as the input characteristic, and CE as a output characteristic. Okay, so simply we can say that the curve between input voltage VE, BE and IB means VBE और IB के बीच में जो कर्व है, या सिंपली ऐसे कह दीजिए IB और VBE का जो कर्व है, that works as a input characteristic, and IC और VCE का जो कर्व है, यानी IC और VCE का जो कर्व है, that works as a output characteristic. Okay, so simply this is the common emitter transistors NPN, and here whenever this used as a common emitter, then its emitter portion connected to the earth. Okay, and this base attached to the input resistance R1 and input voltage VBB. Here the
voltage drop between V and E is VBE, and the curve or input characteristic, the curve between IB and VBE is works as a input characteristic, and the C attached to the load R2 and output source VCC, and here the curve between IC and VCE works as the output characteristic curve. Okay, so let me consider here the input voltage of the silicon transistor is approx input of silicon transistor is approx 0.6 to 0.7 वोल्ट, लगभग इतना वोल्ट होता है. ओके, तो अब चेक करते हैं इसका कर्व कैसा होगा. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि इसकी वैल्यू जो है इनिशिएट होगी, ये होगा IB है, और ये किस ऑर्डर में है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में है. सो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में, और यहाँ पर ये VBE इस वोल्टेज के बीच में ये वोल्टेज वोल्ट में होगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अप्रॉक्स 6 to 0.7 पर ऑपरेट करना स्टार्ट करता है. ऐसे तो कुछ ऐसा कर्व होगा 20, 40, 60, 80, 100, इस तरीके से माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट की वैल्यू होगी. और ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, और इसके लिए आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू हो वो अप्रॉक्स 3 to 20 वोल्ट के बीच में किया जाता है. तो यहाँ पर जब ये सिचुएशन होगी VBE और IB, तो इसमें जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो VCE की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और जब हम उसमें कर्व ड्रॉ करेंगे IC और VCE में तो IB की वैल्यू फिक्स्ड रहनी चाहिए. तो इन दिस सिचुएशन दिस फॉर द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इट्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू is 0.6 to 0.7 volt, and it get start from this potential, and this is the curve between IB and VBE. Okay, like this, and it designed in such a way that it operates in the reverse bias, and for this whenever this voltage is approximately 6 to 0.7, then output voltage maintain up to the 3 volt to 20 volt, and this curve is the input characteristic curve. And now output characteristic curve just like this. So this is the curve between VCE and IC, so it's also formed like this. This is the fixed value of IB, 10 microampere, 20 microampere, 30 microampere, 40, 50 and 60 microampere. In this way, these are the fixed input value, and whenever we apply the fixed input, then the value of ICB increases continuously. So simply we can say that IC is directly proportional to IB. So whenever IB increases, then the value of ICB increases, and this curve we formed in such conditions. So here applied some constant values of IB and will obtain the current in milliampere order. So this IC is in the order of milliampere, and this curve is formed or works as the output characteristic curve. Okay, so let me discuss here input resistance, output resistance. So the input resistance, this is input resistance. So it is the ratio of change in voltage VBE and change in current IB whenever VCE is constant. So you know, simply the resistance is the ratio of voltage and current. So input resistance जो होगा, input change in voltage between V and E and change in current means IB. Base current में change
इनके रेशियो के इक्वल होगा इनपुट रेजिस्टेंस। सो सिंपली वी कैन से दैट इट इज द रेशियो और इनपुट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन VBE voltage, okay, and change in base current is equals to input resistance whenever VCE become constant, and R naught means output resistance, and output resistance output voltage और output current के equal होगा। So change in it is equals to the ratio of change in voltage VCE and change in current or change in collector current whenever IB is constant. So this is equals to the output resistance. So output resistance or not is equals to the ratio of change in voltage of CE and change in collector current whereas base current remains constant. So this is the output resistance, and here the current amplification or current gain or that is equals to beta and it is equals to delta IC upon delta IB। देखिएगा यहाँ आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है और इनपुट थी बेस करंट IB, ओके। ये रीजन तो क्या था, कॉमन था, तो आउटपुट ये हुआ और इनपुट का वर्क बेस करेगा। सो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होता है वो करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन होता है, ओके। सो बीटा इट इज डिनोटेड बाय बीटा। सो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट delta IC and change in input current delta IB, okay। So beta is equals to this, and now we can also solve power gain, that is P gain or denoted by AB. So you can also P equals to voltage gain into current gain, ओके। सो जैसे हमने करंट गेन निकाला वैसे आप वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। मींस V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ये हो जाएगा वोल्टेज गेन और करंट गेन यहाँ पर बीटा है। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट करंट के इक्वल होगा और इनपुट वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा इनटू बीटा। V इक्वल्स टू आई आर से करा हमने। सो आई डेल्टा IC और R नॉट आउटपुट और इनपुट डेल्टा IB और R I ये होगा और ये करंट गेन। सो यहाँ पर P गेन इक्वल्स टू R नॉट अपॉन R I डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, फिर बीटा हो जाएगा और ये बीटा। सो R नॉट अपॉन RI into beta square, ये वैल्यू आ जाएगी पावर गेन की। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन एंड पावर गेन, ओके।